there was beautiful thing called Night of Glory that PokerBaazi organized. Okay. And what they did was they called out they handpicked some players who won like some gold medals, main event winners, leaderboard winners. समझ गया. I was given a trophy by Mary Com. I play tournaments, so there are two types. एक second, अब वो Vietnamese dong में कितना था? Because that figure is obnoxious to hear. I think 867 million dongs. एक वो था ना कि ड्रीम रहा है हमेशा, and Bombay is like that, right? Yeah. Very crazy thing that came to my mind was मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत ही क्लियरली बोला था कि आज तू पहुंच गया अपने शहर में. Such crazy nights of poker that we've had. I remember हम लोग एक दूसरे को पिक किया, come back together in our office attire. सीधा game of poker. We were playing for like 3 hours. Next day we are going to office together, and so many beautiful memories. Rather than going for a movie, you know, ये आप poker session कर सकते हो. Like it becomes an entertainment part of things. Yeah, 100%. Wonders can कोई happen. superstitions, any like kind of things you put in your pocket, clothes that you wear? I wear red boxers when it comes to like big occasions. सही है भाई, सही है. आपने like I knew that I was doing this thing, so I'm wearing a red boxer today. अरे क्या बात है? Hi Siddhaarth. How are you doing? I'm good, sir. So nice How are to you? see you. Yes, come. Same. Hello Avneesh, welcome to the Bombay Journey. Thank you so much, Siddhaarth. Thank you. This, Lovely folks, to be here. is our promise to everybody कि हमने बोला था आपको कि हम Bollywood celebrities on Bombay Journey के अलावा अलग लोग लेके आएंगे. So he is a pro athlete, Avneesh Munjal, who plays poker and earns a lot of money, is what I've been heard. It comes as a byproduct, but like yeah, it's good to hear. Like when we call ourselves as sports persons and athletes, but given that poker is a little mystified space and itna zyada, there are so many myths and taboo around it, so we don't hear we as athletes from the outside world, so it's very humbling and good to hear that. It is a skill-based game. Yeah. You know, it's just that because it's played with cards, yes, you know, people look at it as a way of gambling, or thoda sa wo wala negative angles are there. But like I personally look at it as a game of data and numbers, and cards are just representation of that. पहली बात तो मुंबई कितना ऑफन आते हो क्योंकि आप हो हरियाणा के. Yeah. The first time that I came to Bombay was in 2015 when I मैंने MBA खत्म किया था और I got placed banking नौकरी. Yes. I got placed with City and in the city of dreams, yes, right? Yes. So City in the city of dreams, and yeah, like I was here for like 7 years, and those are like the most formative years of my life from the angle of like growing up as a person, professionally, personally. Poker came into my life when I was in Bombay. So very good memories. तो मतलब काफी झंडा गाड़ तो यहीं से हुआ है चालू. हाँ, मतलब सही चीजें पनपनी यहाँ से शुरू हुई हैं, जैसे हम बोलते हैं. हाँ. तो भिवानी का लड़का becoming an international athlete, ये कभी सोचा था इतना उखाड़ लोगे? नहीं, ऐसे कभी सोचा नहीं था कि like when you're growing up also that you don't like, of course you have dreams and you have like you don't know in which space you will achieve those dreams, or you will get into sports or something like that, but dreams were always there, and bigger things were always in my head. It's just that the platform which comes with it was something which I was not sure about at that time, and it obviously comes when you mature and explore a lot of things. Yeah, you know. आप थे अच्छे मैथ किड? पढ़ाई में अच्छा मैं रहा हूँ, like not the topper, और वो मेरा कभी ऐसे गोल भी नहीं रहा था. Like मेरे पेरेंट्स हमेशा like I remember वो वाले थोड़ा सा कंपैरिजन एक आ ही जाता है, like इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं हम लोग, एंड पढ़ाई इज द मीन्स फॉर अ बेटर फ्यूचर, 100%, राइट? इट ट्रांसलेट्स इनटू दैट. सो हमेशा से वो रहा था, बट मेरे को पर्सनली हमेशा ये लगता था कि पढ़ाई में अच्छा रहना है, एंड दैट इज अ वे टू ग्रो इन लाइफ, बट स्पोर्ट्स में भी आगे जाना है. थोड़ा बहुत मैं थिएटर भी करता था, लाइक आई यूज्ड टू लाइक पुट माई सेल्फ. हाँ, सो स्कूल प्लेज वगैरह, इवन कॉलेज में भी मैंने लाइक थोड़ा बहुत प्लेज वगैरह किए हैं, लाइक फ्रॉम दैट एंगल. आई हैव रिटन आल्सो अ लिटिल बिट ऑफ. क्या बात है. हाँ, सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू get my hands on different things, and try and explore कि कहाँ पे मैं grow कर सकता हूँ. And तो चुल थी कुछ उखाड़ने की. 100%, yeah. आप लोगों को इनकी सक्सेस वाली बातों पे बताता हूँ मैं आते हुए, बट अगर इनको शॉक करना है तो मेरे को तो ये जानना है भाई जोर से कि एक बाउट में कितना पैसा आप जीते हो कभी, अगर किसी बैठे हो तो. I'll answer this question, but मैं बहुत पिछले 1 साल से मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अलग एंगल से देखता हूँ पोकर को. अब आई सी द मनी दैट आई एम ब्रिंगिंग इन और द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट आई एम गेटिंग एज अ बाय प्रोडक्ट आउट ऑफ इट. अच्छा, ओके. दैट पैसा आपको ड्राइव नहीं कर रहा. No. But to be very honest, it was there when I started.
that money part was one of the things, but पिछले 1-1.5 साल में what I've realized is वो sports mindset बहुत ज़्यादा आ गया है कि if you continue to hustle and grind, जैसे हम बात कर रहे थे, if you continue to work hard on the processes and execute that on the field or on the game, then I think money becomes a side product and it automatically flows. But coming back to कितना कमाया? मतलब the biggest score अभी मेरा recently एक आया था, like वियतनाम में I won a tournament, मेरा first live trophy था वो. It was again like live poker में तो ये होता है like I play tournaments, so there are two types. एक सेकंड, अब वो वियतनामीज डोंग में कितना था? Because that figure is obnoxious to hear. I think 867 million dongs. Yeah, there were like 6 zeros, and my family was watching that stream, so it was there on YouTube. They were streaming the whole final table, and it's still there. And my family, like I after the final table was done and I won the tournament, I was seeing all the messages, and at least like 3-4 messages were कि ये इतनी ज़्यादा zeros क्या है, मतलब is this the right figure or whatever. That's superb stuff. Congratulations. Thank you. So there is some amount of mathematical backing to the decision that you're making. The people who are actually crushing the game right now, India की बात कर लो या फिर European fields जो crush कर रहे हैं, these are all like 20-25-year-olds right now, coming from IITs, IIMs, and Superb. at the top of their game. हाँ, मतलब IIT, IIMs में तो अब सिखा भी रहे हैं. हाँ क्या? Like poker is taught as a strategic maneuvering exercise. Yeah, it helps in business decisions, it helps in risk management, it helps in money management. A lot of life learnings are to be taught if you look at it in the right way. अच्छा जी. Yeah. यार थोड़े एथलीट्स वाले सवाल तो करने ही पड़ेंगे आपके साथ. देखिए 100%. क्या है रिचुअल बिफोर यू गो इनटू अ बाउट, बिफोर यू लाइक डू यू हैव अ कोल्ड शावर रूटीन टाइप ऑफ थिंग? 100%. Like ये मैंने last so couple of things, like I think given that it's a mind sport, आपका your mindset has to be very clean and you need to be in a flow state when you're playing. वो flow state मेरे को बहुत ज़्यादा feel हुआ है with cold showers that I've recently started. Like पिछले I think April last year या March last year से मैंने I saw that people are doing it. तो एकदम ठंडे पानी में नहाते हो आप? हाँ, मतलब और मैं अभी जैसे पिछले 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो अभी ठंड में भी मैंने कोल्ड शावर्स लिए हैं. Like, हाँ, so the thing is like पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी because the biggest problem in taking a cold shower is सांस नहीं ली जाती. Breathing becomes a problem when you're in the shower. तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक आप adjust हो जाते हो, then you start liking it. और आपको पता है पहले या दूसरे दिन से ही different change in terms of your focus feel होना शुरू हो जाता है. क्योंकि डोपामाइन के आता है. Yes, 3 से 4 घंटे तक you are in a very focused state. The dopamine is released very slowly compared to जैसे आप sugar rush ले रहे हो. That is a very instant dopamine rush that you get. Here it's a very elongated dopamine rush that you get. So it's one of the rituals that I have taken in my pre-game rituals कि ये वाली चीज करनी है, and given that it brings in results, eating is one of the things. Eating clean is one of the things. Oh yeah, okay. So you don't want something like आप छोले भटूरे खा के नहीं बैठोगे क्योंकि correct. आप डका रहे और मतलब your brain has to be very fresh when you're grinding, and when you're grinding for like 8 to 12 hours. You don't want in between the session to have brain fart moments or brain fry हो रखा है आपका, and that usually comes if you're eating bad before the grind or in general आपकी diet अगर वैसी है. मैं थोड़ा घर की रखता हूँ. खिचड़ी is my like favorite food. मैं like हरियाणा से आता हूँ, शायद ये रीजन हो सकता है, बट मेरे लिए ये तो गोल है कि मैं कहीं भी नई जगह जा रहा हूँ ना, खिचड़ी जरूर खाता हूँ मैं वहाँ की. लाइक आई रिमेम्बर जब मैं बॉम्बे आया था पहली बार, सिटी हैड पुट मी अप इन ट्राइडेंट, बीकेसी वाला, एंड मेरा लाइक एवरी थर्ड डे माय डिनर वाज खिचड़ी. सुपर्ब. एंड दैट इज माय सोल फूड. लाइक आई फेल्ट दैट. सो घर का खाना, जब मैं वियतनाम जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, कंबोडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, या फिर एनी अदर प्लेस यूरोपियन सर्किट अगर कर रहा हूँ, दाल सूप इज समथिंग which I like. Usually my lunches are just dal soups. दाल सूप मतलब दाल ही, but normal dal. हाँ, but like you don't want to like stuff yourself. You want to keep your stomach very light, think very clearly, and when you are on live trips, it's like a Virat Kohli going on a trip or going on his World Series, or Djokovic or Federer doing these things. तो वो like it becomes a very strict part of your routine. Oh, interesting. तो उस angle से like आपको अगर if you have to do better at a macro level, I think these are the micros that you need to take care of. So sleep is one thing, eating right is one thing, cold showers are these are the micros that I think थोड़ा सा अगर decent way में आप manage कर लो, तो
wonders can कोई happen. superstitions, any like kind of things you put in your pocket, clothes that you wear? बहुत ज़्यादा नहीं है, like, and I try to stay away a little bit from my mind also, like mindset को भी मैं इतना ज़्यादा वैसे एंगल से नहीं रखता हूँ. But yeah, little bit is like I have a thing कि मैं थोड़ा सा I wear red boxers when it comes to like big occasions. सही है भाई, सही है. आपने like I knew that I was doing this thing, so I'm wearing a red boxer today. अरे क्या बात है. I am also wearing a lucky t-shirt. जो लोग पहचान गए हनी सिंह वाले एपिसोड में हमने ये पहनी थी, तो आज मैं वो रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था हम एक बेहतरीन चीज करने वाले, नया कुछ करने वाले बॉम्बे जर्नी में. So if I'm on a big final table, let's say कल मेरी कोई बड़ी final table है, तो I'm sure कि मेरे वो red, हाँ, बहुत सही, बहुत. So जहाँ पहली बार आए उस दिन, मुंबई का पहला दिन याद है आपको? कहाँ आए, कहाँ उतरे, क्या आप सोचा था भाई मुंबई इतना बड़ा शहर, कुछ ऐसा? First days were obviously about settling in only, and वो like I got placed as a management associate, तो हमारा like I was very excited about meeting new bunch of people who were being recruited by City, and जगह से like अच्छे colleges से आए थे, so I was very excited about that. Met a lot of people, you know, during the induction time. So very exciting times, but I was very excited about City. In terms of like एक वो होता है ना कि dream रहा है हमेशा, and Bombay is like that, right? आपने पता बहुत like, and it's nothing like कि मैंने सोच के रखा था, मेरे दिमाग में बहुत very crazy thing that came to my mind was, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत ही clearly बोला था कि आज तू पहुंच गया अपने शहर में. I remember that very clearly. Because in a way, like in a lot of conversations, I used to talk about कि यार ये like यहाँ जाना है, like dreams are there, right? तो manifestation हो रही थी कहीं? 100%. Connecting the dots वाली बात आ जाती है ना कि like dots are there, multiple dots are there. You just like आप connect तभी कर सकते हो once, you know. Yeah. पहली बार कब पोकर आपके दुनिया में, दिमाग में आया? Very recreationally and very like home game stuff that used to happen. Never even thought about कि मैं कुछ इसको professional level पे भी खेल सकता हूँ. I was very intrigued by the shows that used to come, कि high stakes poker duels that used to come. ये मैं भी देखा हूँ. हाँ, so वहीं से आपका वो शुरू होता है ना, affinity towards the game and the love towards the game, कि यार कैसे कर रहे हैं यार ये लोग, यार ये lifestyle क्या lifestyle है. थोड़ा बहुत वहां से अट्रैक्शन हुई, बट इट वाज अगेन वेरी लिमिटेड टू मी डूइंग लाइव ट्रिप्स इन अ कैसीनो और सम प्लेस व्हिच इज फ्रेंडली टुवर्ड्स पोकर. तो वहां पे जाके अगर आप कोई इंटरनेशनल टूर कर रहे हो, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू गो टू दीज प्लेसेस एंड हैव लाइक स्पेंड a few hours and play games of poker. The real thing started when I was in Bombay in 2018 end. Okay. One of my very close buds from MBA, Dhaval Lachwani karke, he was in Prague, and he had, right after his MBA, he had left his job and started playing poker professionally. And मैंने जैसे ही देखा, I'm like, I messaged him कि bro, what are you doing in life, and how are you doing it? You know, I want to do this. Like, how do I get there? So he told me like कि ऐसे आप online खेल सकते हो and tournaments खेल सकते हो. And that's when like I moved from cash games and home games setup to a tournament structure and online setup. More organized, more proper. Yes, and study came into game. 2018 end to like probably like 2021, I was playing very semi-professionally. Gradual shift happened that बहुत like I had a very demanding job. I was with like. तो क्या दिनचर्या होती थी? मतलब आप सुबह जॉब पे जाते थे और शाम को खेलते थे? हाँ, so 8 to 5 used to be my work hours majorly. Asian markets में like market hours में काम होता था. सिंगापुर ओपन से लेके इंडिया क्लोज तक. Right. So used to deal with foreign clients majorly. So 5 बजे खत्म हुआ. Used to come back to home. तो 1-1.5 घंटा सोया. 8 बजे मेरा पोकर ग्राइंड शुरू होता था. 8 to 3, 8 to 4 in the night. It used to happen like that. And 1.5 साल मैंने थोड़ा सा like abuse किया अपनी body को from the angle of like heavy caffeine, less sleep. And it came also like it impacted my health a little bit also. I felt that. And फिर थोड़ा conscious decisions यही हुए. तभी मेरा decision आया about leaving the job. When like 1-1.5 साल से मेरे दिमाग में thought चल रहा था when I like find my right space in poker and how with study I was improving a lot, and it showed in my results also. मतलब आप अच्छी पैकेज पे होंगे जब आपने छोड़ा? Yeah, City, like I was with markets, so it was like I was well taken care of from that angle. But at the same time, like the motivation was like the love for the work. I loved working, and my role was very beautiful. Yeah. Like I was managing clients, and I used to love that. It's just that your real heart and the passion, like वो वाला पोकर की तरफ shift हो रहा था, and धीरे-धीरे like subconsciously, it was never a conscious effort कि हाँ आज के दिन मेरे को ये करना है. Slowly and steadily, like. A quick naman to your first pit stop in Bombay. Yes, sir. Trident. Yes, sir. So, like my 8 to 5 was my
main job, day then job. 9 to 3 was your Evening 8 to 2, 8 to 3, 8 to 4 was my evening job, which was my side hustle initially. Gradually and very naturally, the balance shifted towards this being my main thing and my love. And that obviously was there and the focus was there. But at the same time, I understood that my real calling and sense of purpose lies here. So it took a little bit of, like, not a little bit actually, like 1-1.5 साल तक मेरे दिमाग में thoughts चल रहे थे कि यार क्या कर रहा हूँ मैं life में, if I'm thinking about taking this professionally. Correct. Is this... But like, were you making enough to be taking that decision, like off of poker? Results wise, so of course, like poker mein, it's a very ironical thing that when we say that results, you shouldn't really look at results and focus on processes, but at the same time, results give you a sense of are you doing things right? Okay. It's a way of measurement that if you're doing things right or not. So I'm a big data guy. So ठीक है. 5 साल से मैंने I think कुछ 7,500-8 हजार टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो मेरे पास हर टूर्नामेंट की एक एक्सेल हिस्ट्री है. Like my whole Excel. सच्ची? Yeah. I record every tournament that I play. Like the whole sheet is there, and like month on month, if I'm generating good amount of, like, I'm creating my financial independence out of it. I'm making decent money out of it. If not the same equivalent amount of money what I'm making from my day job also. And in that process, I'm doing something which I truly love, and it helps me grow. It makes me a better person. In life also. Yeah. यार ये तो बहुत प्यारी जगह ले आए. Like I remember यहाँ से लेते ही यहाँ से right लेके left लेते थे. It used to be such a like everyday hustle. Yes. And luckily for me, like मैं 5 बजे ऑफिस से निकल जाता था. I found that sweet spot कि इस टाइम पे ट्रैफिक कम होता है. And my bosses were always like, I've had like very beautiful like connections with my bosses in terms of कि हाँ 8 से 5 ये मेरा बंदा है और ये बहुत अच्छा काम करेगा. उसके बाद उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यार तू 5 बजे क्यों जा रहा है. यूजुअली अब जैसे लोग बैठे रहते हैं लेट तक, बट आई वो ऑलवेज बिन कि हाँ अपना उस टाइम में आप क्रेजी एफिशिएंसी से काम करो. सिटी बैंक वाली बिल्डिंग इज 550 meters away. It's right here. It's right here ना? Yeah. Left में. उसको नमन करके आते हैं ना फिर. चलो 100%. Yeah. We'll take a left. Yeah. Left ले लो. You know what you. मैं थोड़ा सा लोगों को और समझाने के लिए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही समझ रहा था. मैंने देखी वो फिल्म 24. अब मुझे पता है वो ब्लैक जैक के बारे में. 21. तो 21 मैंने फिल्म देखी. उसके अंदर तो ब्लैक जैक खेला जा रहा है, बट उसमें काफी वो लोग काउंटिंग कर रहे हैं और उसमें हाउस वर्सेस पीपल हो जाता है. राइट. ये पोकर से काफी अलग है. क्यों? 100%. So blackjack, roulette, all these games, these are casino games. They're played against the house, the casino. Poker, on the other hand, is never played against the house. It's played amongst the players, and house or the casino is usually taking a commission out of it because it's a game of skill. Okay. Because casino can't beat players and they can't have bots or. तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइजर है. Yes. कि मैं टेबल ला के रखा हूँ. मार्केट प्लेस है. हाँ. मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ गेम. I'll facilitate everything for you. And मतलब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी जो कर रहा है वो सिर्फ आपके लिए एक जरिया है. Yes. Correct. So it becomes like that. Yeah. इसीलिए भी लीगल होगा ना पूरी दुनिया में. हाँ, जहाँ पर है. या वहाँ पे तो यार वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर जैसे होता है वेगस में पिछले 50 साल से चल रहा है. 52nd और 53rd ईयर दिस वाज फॉर वर्ल्ड सीरीज. लाइक वी हैव एनपीएस. जैसे इंडिया में अभी लाइक एनपीएस इज पिकिंग अप, नेशनल पोकर सीरीज दैट इज पिकिंग अप, एंड बाजी इज डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग पोकर इन द राइट स्पेस, राइट? सो थिंग्स लाइक दैट एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट. अब जैसे यूएस में जाके ना पीपल सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल. देयर आर लेडीज इवेंट्स, देयर आर सीनियर्स इवेंट, देयर आर सुपर सीनियर्स इवेंट. There is an event where only 50 years plus can participate, and there are 3,000 people playing. Oh, wow. There is an event called Super Seniors where 65 years plus can only play. Bracelets are awarded for those tournaments, and people come and play with such passion and such numbers. It's like celebrated as a festival over there. क्या बात है? Yeah, so it's in a way, you know, it's a part of their culture. Texas Hold'em, the pinnacle of the game that is there. It came from Texas, like from that angle. From that, ये बताओ मेरे को कि नेशनल पोकर सीरीज क्या है भाई? आईपीएल जैसा है क्या? 100%. या लाइक अगर थोड़ा सा इक्विवेलेंट तरीके से देखो तो इट ब्रिंग्स अ प्लेटफॉर्म वेयरइन यू कैन एट अ नेशनल लेवल you are getting. So last year what happened was I won the leaderboard for National Poker Series. I won a couple of gold medals in that. Congratulations, boss. Thank you. And I won the leaderboard also. And there was beautiful thing called Night of Glory that PokerBaazi organized. Okay. And what they did was they called out the
they handpicked some players who won like some gold medals, main event winners, leaderboard winners. समझ गया. I was given a trophy by Mary Kom. So Wow. she was invited to the whole thing, and it brings in a whole sports and athlete perspective to things. Feel है भाई उसमें. I never thought that something like this would be happening for something like poker. So it is growing, it is in the right space. And थोड़ी बहुत myths हैं इधर उधर, अगर चीजें ठीक हों, and if it's seen in the right space, it's a beautiful game. It's a game which makes you a better person. You can get financial freedom out of it. You can live your dreams of travel. Yeah. You know? So कार और बाइक्स की जो बात कर रहे थे, पहली गाड़ी का क्या याददाश्त है आपकी? मैं इतना ज़्यादा like I'm not a कार और बाइक पर्सन. हाँ, like bike used to happen. Like there were years when I was crazy about bike. वो those roadies वाले. Yeah. You know, when you were 16-year-old, 17, we've all been there, right? Those teenage years वाली part. करिश्मा से प्यार. मैंने like I had a Charisma bike which I bought off sweep money. Really? Yeah. अरे like, congratulations. Well, yeah, that's a it good happened story. in college. But like engineering and like उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो रहता था कि हाँ I want a bike. But अब like मेरी पिछले 7 साल से like I'm very happy like I have same car and I'm ऐसा कुछ वो नहीं है कि like यहाँ से right sorry I forgot to tell you. हाँ, this is the ये आप कौन सी वाली में रहते थे? इसी बिल्डिंग में 6 फ्लोर में रहता था इधर. नहीं, नाम बताना पड़ेगा अपने वो गेट में घुसते समय और फिर अपन शूट अभी अब एंट्री I know महिंदर करके यहाँ पे गार्ड होते थे. Like he will remember me by face for sure if he's still working. अरे he's there महिंदर. मैं जाके मिलूं एक बार. हाँ, we'll get down and meet him आगे. यही है, देखिए बॉम्बे जर्नी के मजे. चलो. आपको शक्ल याद है मेरी? सही बताओ. कहाँ रहता था हमें बताओ. हाँ? 6 नंबर में सर. 6 नंबर में रहता था. आपका बहुत अच्छा बात बता रहे थे अभी अंदर. 664 वो सेक्रेटरी के साथ वाला घर था. या बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए पोकर के ये. नहीं मतलब इनके साथ एक एपिसोड हो रहा है तो ये वाली जर्नी कवर कर रहे थे कि कहाँ 6 साल में रहा हूँ, 7 साल रहा हूँ. तो उस एंगल से थोड़ा कवर कर रहे थे. देख के आते बिल्डिंग अभी. हाँ चलो. सेशंस ऑफ पोकर नाइट्स, हाउस गेम्स जो हम करते थे यहाँ पे. हाँ, एट आवर फ्लैट, एट दिस फ्लैट, यहाँ पे नेहा अभिनव जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका फ्लैट होता था. आप लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट्स में बताइएगा. सच क्रेजी नाइट्स ऑफ पोकर दैट वी हैड. आई रिमेंबर हम लोग एक दूसरे को पिक किया, कम बैक टुगेदर इन आवर ऑफिस अटायर, सीधा गेम ऑफ पोकर. वी वर प्लेइंग फॉर लाइक 3 hours. नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू ऑफिस टुगेदर एंड सो मेनी ब्यूटीफुल मेमोरीज. This is my parking spot, ये वाली. Exactly this. This right here. This right here was the parking spot. And which was your house? ऊपर 6th floor. This one. ये अभी जो जाली के नीचे वाला है ना, वो वाला it used to be that. So, what plans for the future? Abhi, what happens when do these tournaments happen? How can somebody see you play? Basically, poker में the most important thing that ultimately comes to you not going broke is bankroll management. Okay. आपका अगर your life role is different, your bankroll of poker is different. Okay. पोकर में अगर आपने लगा लिया कि यार मेरा हर किसी का डिफरेंट हो सकता है. मैंने क्या किया था, मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट आई जस्ट पुट इट इन अ डिफरेंट बैंक अकाउंट कि दिस इज गोइंग टू बी माई लाइक लोन दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम माई सेल्फ टू माई पोकर ड्रीम एंड आई एम पुटिंग इट आउट देयर. उसको मैंने 200 से डिवाइड किया एंड आई स्टार्ट प्लेइंग दोज लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स कि अगर आप मान लो 10 लाख रुपए लगा रहे हो, 10 लाख रुपए आपने अलग रख लिए पोकर बैंक रोल के लिए, तो आप उसको 200 से डिवाइड करा मैंने, तो कितना बन गया 10 लाख 10,000 5,000 रुपए. करेक्ट. स्टार्ट विद लाइक मैं तो बल्कि और भी मैंने आई थिंक मैंने 500 से डिवाइड किया था बिकॉज आई वाज प्लेइंग सब 2,000 रुपी टूर्नामेंट्स एट दैट टाइम. आपका क्या है कि आप अगर आपने इतना ही परसेंट डाला तो आपको ये पता है कि मिटिगेशन अगर हाँ सो बेसिकली योर और अगर आप थोड़ा लूजिंग स्ट्रीक पे जा रहे हो यू नो देन यू ब्रिंग योर स्टेक्स डाउन बिकॉज योर बैंकरोल हैज डिक्रीज्ड. कीप दैट डिविजिबल फिगर कांस्टेंट कि आपने 200 रखा 200 रखो. अगर आपका बैंकरोल 10 से 5 लाख हो गया then you start playing 1,000 rupee tournaments. Okay. Like that. तो उस एंगल से like bankroll management becomes a very key part of things. Live में क्या है, the binds are bigger, तो आप थोड़ा सा like you have to be very careful
बिकॉज बैंकरोल थोड़ा सा लाइक आप प्ले कर रहे हो अपने बैंकरोल के साथ. ऑनलाइन इन दैट वे बिकम्स योर ब्रेड एंड बटर, बिकॉज ऑनलाइन में क्या है, यू कैन पुट इन इनफ वॉल्यूम टू रियलाइज योर ROI ऑल्सो. लाइव में क्या है, लॉट ऑफ रिक्रिएशनल पीपल प्ले ऑल्सो, सो योर ROI इज वेरी हाई. अभी अगर मैं ऑनलाइन खेल रहा हूँ तो 30-35% ROI पे मैं खेल रहा हूँ अभी, जो मेरा डेटाबेस कहता है. ठीक है. अगर मैं लाइव खेल रहा हूँ तो इट विल यूजुअली बी लाइक 60-70%. ROIs are massively different because you're playing in a softer field. Okay. लोग जैसे कोई भी recreational है, जैसे मैं पहले था, मैं पहले लाइव खेलता था, right? People don't usually as a amateur or a recreational थोड़ा सा मिसट्रस्ट रहता है ऑनलाइन के साथ कि रिग तो नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी पीपल डीलिंग कार्ड्स. कौन है ये भाई, इनका ऑफिस किधर है? बट आज के टाइम में लाइक ऑनलाइन इज सच अ ब्यूटीफुल स्पेस इन टर्म्स ऑफ RNGs which are like certified in terms of secured system, your funds are safe. Bazi is doing a beautiful job in that in terms of technological advances and ये stuff. जब आप बाजी बोलते हो PokerBaazi की बात कर रहे हो? PokerBaazi, yes. ठीक है. Yes, थोड़ा वो फ्लो में like बाजी बोलते हैं तो उस एंगल से निकल जाता है. But yeah, online is going to be the bread and butter because it gives the opportunity to play the tournaments at my bankroll. Yes. And I can get multiple tournaments that I play usually. Like abhi I've developed a habit of playing 12 tables at one point. Wow. So 12 tournaments मैं इकट्ठे खेल रहा हूँ at one point. Super. So this session goes on. Like I started with 2 tables. ठीक है. Moved on to 4. Very gradual. एक महीना लग जाता है to make a shift. Oh. अभी मैं 10 to 12 जब conscious effort डाल रहा हूँ, मेरे को पता है थोड़ा सा मैं अपनी A गेम से A- गेम खेल रहा हूँ because stretch हो रहे हो. आप stretch कर रहे हो अपने आप को. You may not spend enough time on one particular decision. If you have to think because there are more tables now, it's a conscious decision that you're taking in terms of the overall long-term growth, right? कि आपको volume बढ़ानी है, that is the end goal. So because bankroll management है दिमाग में. हाँ, volume आप बढ़ाओगे तो आपके results overall, your graphs will continue to uprise only, right? Correct. So online becomes your bread and butter. So coming back to your question of focus कि कहाँ आप आगे देखने वाले हो, online is going to be the focus, mixture of online and live. But onwards and upwards is what I think. All the best, boss. Yeah. All the best. This is how I'm seeing. Yeah. So, bhai, what my little experience of poker says is that there is this whole big thing about listening to your opponent. ये क्या मतलब हुआ? Poker is a game where you're telling a story. Okay. So it's a game where you're taking in every hand you take 3 or 4 major decisions. Like if you've played poker, flop आता है, turn आता है, river आता है, right? Yes. And pre-flop decisions होते हैं. So at every stage, you're telling a story to your opponent that I am representing these cards and I'm representing this range of hands that I can have, right? अगर थोड़ा टेक्निकलिटी में मैं अगर जाऊँ, अगर मैंने अर्ली पोजीशन से ओपन किया, अगर मैंने रेज किया है एंड मान लो बिग ब्लाइंड में डिफेंड किया है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है. हाँ, मैंने अर्ली पोजीशन किया है, सो आई एम ओपनिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेंज ओनली. आई एम नॉट ओपनिंग अ वेरी वाइड रेंज. अगर मैं लेटर पोजीशन से कोई हैंड खेल रहा हूँ तो मैं थोड़ा वाइड रेंज खेल रहा हूँ, अर्ली पोजीशन से मैं कम खेल रहा हूँ बिकॉज मेरे को आउट ऑफ पोजीशन खेलना पड़ेगा. सो द पॉइंट इज कि यू आर टेलिंग अ स्टोरी. अब मान लो मैंने रेस किया, बिग ब्लाइंड ने डिफेंड किया और फ्लॉप आता है एस 5-7. Okay. I have more ace X's than him in my opening range, right? When I'm opening from early position. So on that board, I can represent. Doesn't matter if I have queen 10 suited. I can represent ace that I have. I can have aces. I can have ace Basis of king. that, you can take your other. Basis bet. of that, I can tell my story. Yeah. So when I'm telling my story, and the other person is telling their story also, basis the range that they may be playing. So listening to your opponent, what you were saying, comes from storytelling part of things. कि क्या जो आप स्टोरी दूसरे बंदे को सुना रहे हो, does it make sense? वो आपने समझी है कि नहीं? Does it make sense or not? If it doesn't make sense, then you bluff catch. Then you कि बॉस तुम प्री फ्लॉप ऐसी मूव कर रहे हो, फ्लॉप पे तुम ये कर रहे हो, टर्न पे ये तो मेरा पत्ता है और तुम इसी पे अग्रेशन दिखा रहे हो. So number of hands that you can have in value are much lesser compared to the number of hands that you can have as bluffs. Fair enough. So in a way, listening to the opponent comes from the angle of, is he telling me the right story? Yeah. Is he telling me a story which makes sense or not? And that's where the game is. Understood. कैसा लगा आपको? Beautiful, yeah. Like it brought in so many good memories. I'm glad. And just happy to be a part of this opportunity. And like आपके show पे ऐसे like big celebrities have come, and for me to get an opportunity like this and just talk about my journey and how poker fits in the whole scheme of things, how it has shaped me as a person, you know, it's just beautiful to talk about. And if somebody can relate to it, you know, and somebody can think कि हाँ यार fuck मैं भी ऐसे सोचता हूँ यार, like, and you know, that'll be a different crazy right node for their life. Yeah, without even knowing, if you can have an impact on somebody's thought process,
nothing beats that, right, in Yeah. life. Thank you so much for being on the Bombay Journey. अरे of course, आप लोग को 100%. कुछ सीखने को मिला हो जैसे मेरे को मिला है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैशेबल इंडिया एंड या kudos to these people like Baazi who are doing good stuff. Oh, 100%. Like platforms like Baazi who are putting the game in the right space, how it should be perceived, how it should be looked upon, how it should not just be a game of cards. Yeah. How it is a medium for you to, like, even if you're not looking at it from a very professional angle, Yeah. rather than, like, for me when I started, like, rather than going for a movie, you know, ये आप poker session कर सकते हो, like it becomes an entertainment part of things. Yeah, There's 100%. gaming mind is there, right, for everybody, especially with like guys. Yeah. You want to play games, Correct. so it just gives you a competitive space from that I angle. love it. So. Superb, yaar. Thank you so much Yeah. for being with us. This is Sid signing off. Bye, guys.